Hello दोस्तों, you're watching this video because you may thinking about finding a job and work in Singapore. Actually, think about Singapore. Singapore is the third richest country in the world by IMF, International Monetary Fund. In terms of GDP, Singapore has the third highest GDP of USD 90,000 per capita. Unfortunately or fortunately, there are the job available in Singapore that Singaporeans do not want to do them. As per 2017, there are 1.3 million people are foreign worker in Singapore. It doesn't sound much, but where Singapore is a small country with the 5 million people, it means every 4 people there's one foreigner working in Singapore. राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको चैनल शर्मा सीरीज पे। आपका भाई आज फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इफ यू थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग a job and work in Singapore, how you can get job and work in Singapore and settle your life in Singapore. If you're new to my channel, please check it out my videos. I do make video on Singapore lifestyle, education, work and more. So let's move to the content. Before you start searching job in Singapore, make sure you have to polish your resume first. And the second thing is make sure your resume just one page, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पेज का कर सकते हो इफ़ यू आर मोर एक्सपीरियंस होल्डर, क्योंकि जो सिंगापुर के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके 4 to 5 पेज का जो रिज्यूमे है उसको गो थ्रू करें। मेक श्योर मोस्टली सीवी क्या होता है कि जस्ट 1 पेज का होता है। यू हैव टू लिस्ट आउट ओनली दैट स्किल एंड क्वालिफिकेशन दैट रिलेवेंट टू योर जॉब यू अप्लाइंग फॉर। कि आपको ऐसे कि होम एड्रेस, आधार कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स हैं, ये डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू लिस्ट आउट ओनली योर स्किल एंड योर क्वालिफिकेशन दैट रिलेवेंट टू योर जॉब। एंड द लास्ट, मेक श्योर you have to add your contact detail that HR department or the relevant platform that can reach to you via email, via your contact number, and make sure your country code must be correct and a प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। वाई प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस? को ऐसा फनी ईमेल एड्रेस मत देना उसमें इस लुक लाइक hotlady.com। इससे क्या होता है कि जो भी आपका CV देख रहा होगा HR डिपार्टमेंट से या फिर जो रिलेवेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने जॉब अप्लाई की है, इट्स डायरेक्टली इफेक्ट योर एप्लीकेशन। सो मेक श्योर यू गिविंग ए प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। एंड द लास्ट इज ए पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपने CV के साथ अटैच करनी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो विच वन इज़ टेकन रिसेंटली और बिफोर 3 मंथ। 3 महीने के बाद जो भी फ़ोटो आपने ली है, 4 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी या फिर साल भर पुरानी, प्लीज़ डू नॉट यूज़ दैट फ़ोटो। सिंगापुर में उस फोटो को यूज़ नहीं करते। मेक श्योर यू हैव टेकन ए रिसेंटली फ़ोटो और बिफोर 3 मंथ। So the next thing you want to do, go online, find a job platform that are registered with the Singapore job portal. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल, जैसे db.com, jobcentral.com, jobmonster.com, jobstreet.com। और आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे साइन इन करना है आपके नाम से, ईमेल एड्रेस से, और मेक श्योर whatever the information you're gonna provide them on their platform which should be matching with you ऑल द डिटेल विद यू CV। जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, जो आप नाम दे रहे हो, मेक श्योर इज मैचिंग विद योर पासपोर्ट एज वेल एंड ऐड एज मच एज द इन्फॉर्मेशन यू कैन ऐड देयर। जैसे कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, इस प्लेटफॉर्म पे आप जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी हो सब ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने बताया था CV में नहीं करना। दैट थिंग्स यू कैन ऐड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लाइक कि आपका एक्सपीरियंस है या फिर आपको अप्रिसिएशन लेटर मिला किसी कंपनी से, जो भी आपकी स्किल है यू हैव टू ऐड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द होम रिसोर्स डिपार्टमेंट और या जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे जो अप्लाई कर रहे हो, so according to that only they gonna decide whether to call you or not for the interview। and इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे भी आप वही जॉब आपको अप्लाई करनी है इस प्लेटफॉर्म पे जो कि आपकी स्किल और क्वालिफिकेशन से मैच करती हो। ऐसे कि नहीं कि कोई भी जॉब आई आपने अप्लाई कर दी एंड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम टू कॉल यू एंड ईमेल यू रिगार्डिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल, ऐसा नहीं होता। सो मेक श्योर यू अप्लाइंग ओनली दैट जॉब दैट आर रियली मैचिंग विद स्किल एंड क्वालिफिकेशन। और आपको ये चीज़ मीन्स डेली बेसिस पे करनी है। यू डोंट एक्सपेक्ट लाइक यू अप्लाई वन जॉब एंड यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम that you're gonna get a success। At least you have to apply minimum 15 to 20 job on different platform। maybe one fine day जैसे भी आपको किसी कंपनी की तरफ से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर जो हंटिंग प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से आपको ईमेल आती है, फिर कॉल आती है दैट दे वांट यू टू इंटरव्यू फॉर द जॉब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि 2-3 महीने आपने पहले जॉब अप्लाई की थी, मे बी यू हैव टू डू सम चेंजेस इन योर CV। सो मेक श्योर यू अपडेट योर CV अगेन, सेंड देम योर अपडेटेड CV। एंड मे बी समटाइम क्या होता है कि दे आस्क यू टू डू स्काइप कॉल और दे मे बी व्हाट्सएप कॉल नाउ इट इज, बट समटाइम क्या होता है कंपनी आपको पर्सनली इंटरव्यू के लिए दे वांट टू डू फेस टू फेस इंटरव्यू, दे इनवाइट यू टू कम डाउन टू सिंगापुर फॉर इंटरव्यू डायरेक्टली। बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है इंटरव्यू से पहले, मेक श्योर यू ट्राई टू गूगल अबाउट दैम, सर्च अबाउट दैम एज मच एज यू कैन। इट शोज दैट हाउ मच यू केयर अबाउट अ कंपनी। जैसे भी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मेक श्योर दैट यू आर आंसरेबल देयर क्वेश्चन।
क्योंकि ये सिंगापुर में मोस्टली जरूर देखते हैं कि आप उसकी कंपनी के बारे में क्या जानते हो बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग देयर। सो यू हैव टू ट्राई टू गूगल अबाउट देम, सो यू विल नो दैट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, हाउ दे टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑल, सो इट विल बी इज ईजी फॉर यू द इंटरव्यू। अगर कोई भी भाई सिंगापुर में जैसे भी इंटरव्यू के लिए आता है फिर या टूरिस्ट पे आता है और कम बजट में कैसे रह सकते हैं आप, आई विल डू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, हाउ यू कैन स्टे इन सिंगापुर ऑन अ लेस कॉस्ट एंड एकोमोडेशन कैसे फाइंड कर सकते हो। सो मे बी आफ्टर वंस यू सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, वंस दे आर okay with you, maybe they ask you to send you all your document again, that what are the education, they will ask you for the photocopy for all the documents, you have to forward to them। जो भी आपके जो पास लगने वाला है, whatever the relevant pass they're going to apply for you is depend on your qualification and skill। actually this all taken care by human resource department। mostly सिंगापुर में 3 तरह के पास है जो फॉरनर के लिए अप्लाई किए जाते हैं, like S pass, E pass and a work permit। that all actually depend on your qualification and skill, that what pass you're going to be get। actually no need to worry about that, all the documentation and the passwords you're gonna get, that all be taken care by a human resource department। तो दोस्तों the job hunting process may it's not be applied same for everybody, but it's pretty much to follow who thinking about finding a job and work in Singapore। जिस भाई को भी मतलब जो सिंगापुर में आने का इच्छुक है, जो जॉब करना चाहता है and want to settle in Singapore, if they follow those steps I mentioned in this video and they have good skill and experience, for sure they can get a job in Singapore and they can settle their life in Singapore। तो भाई आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना and please do not forget to subscribe my channel to get a more interesting video out of Singapore। See you in the next video। Thank you for watching। राम राम भाई।